Welcome to all of you. This session will start Microeconomics Unit 3 Theory of Production. So, before we start production, we must have to know the basic and fundamental aspects of production. So, production arises due to consumption. Consumption, production, exchange and distribution are the basic theory of microeconomics. So, in this session we will discuss about production. So, why people need production? The goods are produced because of consumption. Consumption arises due to human wants. मानविक अभाव जोगु द्रव्यर उत्पादन हुए. तो द्रव्य उत्पादन अतीत रे होतिला एबे मध्य होउछ. In the primitive stage, people collected roots and fruits for satisfaction of human wants. Very fundamental concept. सेते बेले ह्यूमन वांट्स बहुत कम थिला. मानविक अभाव सीमित थिला. डिजायर मध्य कम थिला. विथ द पैसेज ऑफ टाइम समयानुक्रमे आमर अभाव दिन को दिन बढ़िबार लागिला. वांट्स मल्टीप्लाई विथ सिविलाइजेशन. सभ्यतार परिवर्तन सहित मानविक अभाव मध्य परिवर्तन घटिला. तेणु सही अनुपात रे द्रव्य उत्पादन र चाहिदा बढ़िला. तो इठी होची जो प्रोड्यूसर मान ओनलेस कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हैज नो रोल टू प्ले. जदि उपभोक्ता नथिबो ताले उद्योक्तार कोनोसी स्थिति नाही. तेणु द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज द ह्यूमन वांट्स. प्रथम कथाला मानविक अभाव जोगु आज द्रव्य उत्पादन करिया पई उद्योक्ता प्रयास करुछि. तो मल्टी वेराइटी मल्टीफेरियस वांट्स आर देयर. अकॉर्डिंगली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स. उपभोक्ता मानकर चॉइस अनुसार द्रव्य उत्पादन हुए. कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट. माने कंज्यूमर हैज सॉवरेंटी टू चूज गुड्स एंड सर्विसेस. तेणु ये उपभोक्ता होची उपभोक्तांकर पसंद अनुसार द्रव्य उत्पादन हुए. तो इठी होची द्रव्य उत्पादन दुई प्रकार. गोटेला प्रत्यक्ष उत्पादन, गोटेला परोक्ष उत्पादन. डायरेक्ट प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन डायरेक्ट मीन्स द लेबर इज यूज्ड टू produce goods and services with the natural resources available. जो संबल अच्छी प्राकृतिक संबल ताकू व्यवहार करी उद्योक्ता द्रव्य उत्पादन करे. प्रत्यक्ष भाव रे कहिले माने ह्यूमन एफर्ट लेबर द्वारा जो द्रव्य उत्पादन हुए. तेणु एबे जो उत्पादन होची बा टुडे will produce goods indirectly. Man it is made with the help of machine. So less labor and more machines are used to produce goods. So production means creation of utility. Production means creation of a utility. Prior to this, people use goods without paying anything. माने किछि पैसा न दे से जिनस पाउथिला. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनशाइन. सो दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सो these goods are obtained by the consumer without any effort, without any payment. So these are called natural goods. So it is a free gift of nature. It has utility.
इट हैज कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट यह मानविक अभाव पूरण करि पारे किंतु मानव को किसी पैसा देवा पड़ूना people have no money to pay people have nothing to pay for it so this is called the production without exchange it has no exchange value natural goods so another thing is that is called indirect production so indirect production means goods are produced with the help of machine without man machine can produce goods so both man and machine are also be used to produce goods in case of indirect production so in brief we can say संक्षेप रे कहे गले production means the creation of a goods and services having value in exchange ताले वैल्यू इन एक्सचेंज कहले जो द्रव्य आम किणुचे तार यूटिलिटी थिबारु आम किणुचे तार उपयोगिता थिबारु आम किणुचे इट हैज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इट हैज यूटिलिटी एंड कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट यार मानविक अभाव पूरण करिवार क्षमता रही तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन मीन्स the creation for utility having value in exchange कौन सी द्रव्य बा सेवार उपयोगिता सृष्टि सहित विनिमय मूल्य थिले ताकू आमे उत्पादन कहिबा in classical economics they have stated that goods can satisfy human wants so that we call it as material goods जोटी आमे कहजे पार्थिव द्रव्य मानविक अभाव पूरण करे किंतु अन्य केतेक अछि सेवा दैट कैन आल्सो सैटिस्फाई ह्यूमन वांट फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर लॉयर टीचर पेंटर म्यूजिशियन आर्टिस्ट so they have capacity to satisfy human want so these are called services the services rendered to the people for satisfaction of a human want. So, the goods and services have capacity to satisfy human want. मानविक अभाव पूरण करिवार यार क्षमता रही तेणु अर्थशास्त्र कहवा गले कौन सी द्रव्य बा सेवा रो मानविक अभाव पूरण करिवार क्षमता थिले ताहाको आमे उत्पादन कहवा यह मध्य बाजार रे विनिमय मूल्य थिबा आवश्यक जदि से द्रव्यर बाजार विनिमय मूल्य नथिबो ताहाको आमे द्रव्य कहवा नाही कारण it should have exchange value so another thing there are some goods which can be produced but it is not good for the society for example wine another thing is cigarette opium so these are goods and it possesses utility and it has capacity to satisfy human want यह मानविक अभाव पूरण करिवार क्षमता थिबारु तेणु यार बजार क्रय विक्रय थिबारु याको आमे उत्पादन कहवा so this is about the concept of production and types of direct production and indirect production so another thing is the factors of production when goods are to be produced the producer need some factors to produce goods and services so such as land labor capital and organization so these are the 4 factors of production for example I will give you an example suppose a carpenter wants to make a chair so carpenter will have to produce chair from the log of wood and a space is required to produce a chair that is land the carpenter will put his effort his labor for production of goods that is labor then the carpenter will use equipment to produce a chair that is capital and ultimately
the land, labor and capital are needed to produce a chair. So, these are called factors of production. So, factors of production are essential ingredient for production of goods and services. So, nowadays another factor, that is the organization, is the organizer or entrepreneur is the innovator who always innovate new things for satisfaction of human wants, and to how to minimize the cost and maximize the output. It is the sole objective of the entrepreneur or producer. The producer assembles all these things to produce goods and services. So, factors land and labor are the original factors of production. Land is a free gift of nature. It has been created much before human existence. मनुष्य सृष्टि पूर्व ये भूपृष्ठ सृष्टि होता ये भूपृष्ठ रे अनेक संपद रही, दैट इज माने सरफेस, ऑन दी, अंडर एंड एबव. All these are required for the means of production, and its supply is limited. It cannot be expanded. So, that is land. Labor. Labor in economics is the effort, whether physical or mental exertion with a monetary reward. जदि आम श्रम दान द्वारा किसी अर्थ उपार्जन हुए ताको आमे कहबा श्रम. जदि श्रम बदले आमको किसी पारिश्रमिक न मिले ताको आमे श्रम कहबा नहीं. फॉर एग्जांपल, when a mother rears up her children, she does not get any reward. So, her labor is not regarded as labor. So, he is doing for the interest of the family. But on the contrary, when a mother works in the neighbor's family and takes care of her neighbor's children and gets remuneration, so her labor is regarded as labor. So, श्रम द्वारा किसी अर्थ उपार्जन हुए जदि ताको आमे कहबा श्रम, अर्थनीति श्रम कहबा. जो श्रम द्वारा कौनसी पारिश्रमिक मिले नहीं ताको श्रम कहबा नहीं. And the capital. Capital means produced means of production. It is needed to produce consumer goods. So, capital means capital goods are needed to produce consumer goods. So, capital is another essential element for the means of production. So, it is a man-made. Capital is a man-made, that is manushyakrita. And lastly, organization. Organization means it is the organizer, it is the coordinator, it is the entrepreneur who coordinates all other three factors, that is land, labor and capital. भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करी संयोजन करी ये द्रव्य उत्पादन करे. So, these four factors are required to produce the goods and services, that is called factors of production. So, another production function. The production function, what is production function? There is a functional relationship between input and output. Input and output, input means the ingredients to produce goods and services. जो द्रव्य उत्पादन करिया पाई आवश्यक जिनस जेमती भूमि, श्रम, पूंजी, कंचामाल, शक्ति, then other things are required to produce and goods and services. That is production function. That is a transformation of physical input into physical output. That is production function. The production function is a functional relationship between input and output. So, goods are required to be produced with the help of the factors of production. The factors of production are the basic tool for the means of production. कौन से द्रव्य उत्पादन पाई केते गुडी उपादान आवश्यक हुए से उपादान को आमे कहिबा उत्पादन रो उपादान बा उत्पादन रो साधन. जो साधन माध्यम रे द्रव्य उत्पादन हुए. तेणु द्रव्य उत्पादन कहा पाई हुए ना उपभोक्ता पाई बा खाउटी पाई.
खाउटी तार जो द्रव्य चाहूथिबारु जणे उत्पादनकारी द्रव्य उत्पादन करुच्ची उत्पादनकारी संस्था द्रव्य उत्पादन करुच्ची एवं खाउटीर चॉइस अनुसार द्रव्य उत्पादन हुए। तो ये जो आम कहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that is required to be produced goods and services. So production function refers to a functional relationship between input and output of a farm. So it has symbolically described as Qx is equal to Qx means output is a functional relationship I1 plus I2 plus I3 plus dot dot In. So here is a Qx means output. Qx means output, F means function, X means function, I means I1, I2, I3 up to In is equal to factors of production, factors of production. Production or inputs. So inputs needed to produce goods and services, that is called production function. So production function can be described as short run production function and long run production function. तो short run production function स्वल्पकालीन उत्पादन फलन, स्वल्पकालीन उत्पादन फलन कौन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कौन, स्वल्पकालीन उत्पादन फलन कहले इट रेफर्स टू ए पीरियड इन व्हिच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स, कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेनिंग constant. So in the short run the output can be changed by changing only the variable factor. स्वल्प काल रे केवल परिवर्तित उपादान को परिवर्तन करी उत्पादन वृद्धि किंबा ह्रास करा जाई थाए। जेपरि कि आमे कहिबा कोन ना रॉ मटेरियल, fuel, then come to labor. So these are variable factor. It can be changed in the short run, but there are some factors, that is the machine, equipment, that remain constant. It cannot be changed. So in the short run time is very short. It is not possible on the part of the producer to change the fixed factors like land, machine, equipment. So in the short run production function refers to the law of variable proportion. In the law of variable proportion there is a fixed factor and also a variable factor that can be combined to produce goods and services. So short run production function refers to the law of variable proportion. So another is a long run production function. So long run production function, it refers to a period in which output can be changed by changing all the factors. Here fixed factor can be changed including the variable factors. So output can vary with the variation of inputs. So inputs changed accordingly the change of output. So time is long enough for the farm, to change all factors to produce goods and services according to the demand of the consumer in the market. बजार रे उपभोक्ता मानकर जेतिकी चाहिदा अनुसार जोगाण करिया पई जने उत्पादनकारी संस्था चेष्टा करे, कारण जेते आवश्यक सेति परिमाण से द्रव्य करि पारे. इवन फार्म कैन चेंज वन एस्टाब्लिशमेंट टू अनदर एस्टाब्लिशमेंट.
से कौन से गोटे संस्था को उत्पादन संस्था को बदल कि आउ गोटे उत्पादन संस्था तैयारी कर दे पारे. So it is time is long enough. The producer can change the all inputs according to the need of the consumer. So the producer need to produce goods and services by changing all factors taking together, but in the short run only fixed factor remaining constant and varied factors can be changed. So this is about the short run production function and long run production function. स्वल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन. स्वल्पकालीन उत्पादन फलन रे कौन होची ना केवल परिवर्तित उत्पादन को परिवर्तन करी उत्पादन कार्य करा होची. जेपरिक आम कौचे कंचामाल हो, श्रमिक हो, देन कम टू फ्यूएल हो, माने अदर माने जो कैजुअल लेबर हो, याकू नहीं कि आम उत्पादन को परिवर्तन करि परिबा. किंतु स्थिर उत्पादन जोड़ा कि आम कौचे जो बिल्डिंग हो कि इक्विपमेंट हो से गुड़िक स्थिर रहिबो. तेणु ये दुईटा को कंबाइन करके उत्पादन करा जाए स्वल्प काल रे. स्वल्प काल रे सप्लाईटा टिके एडजस्ट स्लाइटली एडजस्ट अधिक एडजस्ट हो पारिबो नहीं. कहीं डिमांड जदि बढ़िला जोगान से अनुसार बढ़ी पारिबो नहीं. कहीं ना इटी सप्लाई इज नॉट फुली एडजस्टेड. इन द शॉर्ट रन सप्लाई कैन बी स्लाइटली एडजस्टेड. आंशिक भाव जोगानटा परिवर्तन हो पार. बजार द्रव्य सामग्री जदि बढ़ावा को चेष्टा करा जाए स्लाइटली एडजस्टमेंट हो पार. किंतु लॉन्ग रन रे द सप्लाई कैन बी फुली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. तो दैट इज फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द लॉन्ग रन. तो इन द लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड आर फुली एडजस्टेड, बट इन द शॉर्ट रन supply is slightly adjusted. So this is about short run production function and long run production function. So now we will discuss about the concept and types of a product. So what is product? Product refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a given period. एक निर्दिष्ट समय रे जने उद्योक्ता जो परिमाण द्रव्य सामग्री उत्पादन करे ताकू उत्पाद कहा जाए. जो उत्पाद व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तो इठी होची उत्पादन कहले आमे जो कहूचे आउटपुट. गुड्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर. So what is a total product? Total product refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with a given factor input. It is known as total physical output. एक निर्दिष्ट समय रे जणे उद्योक्ता तार समस्त पूंजी श्रम को विनियोग करी जो मोट उत्पाद अर्जन करे ता होची मोट उत्पाद. तो अनदर इज एवरेज प्रोडक्ट. तो एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. तो वेरिएबल इनपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. सो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर. एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर. एपी इज इक्वल टू टीपी by variable. So when one unit of variable factor is added, then what output is to be achieved? So माने it means average product means per unit of variable output. तो गोटे श्रमिक जदि विनियोग हुए केते परिमाण द्रव्य उत्पादन हबो ता होची माने हाराहारी उत्पाद. अनदर इज मार्जिनल प्रोडक्ट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू addition made to the total product by putting an extra unit of labor by producing another output. So it means marginal product of n units is equal to marginal products of n units is equal to total product of n units minus total product of n minus 1 units. So other alternatively we can say alternatively we can say MP of n units is equal to delta Tp by delta V.
Here marginal product of nth unit of output can be obtained by difference in total product by difference in variable factor. So, here total product TP means total product, B means variable input, another is delta means change, parivartana. So, this is about the various types of output in which goods are to be produced by a firm. So, now returns to a factor. So, returns to a factor refers to the law of variable proportion. Returns means production. So, returns to a factor. So, there are two factors, one is a fixed factor, another is a variable factor. So, fixed factor means it is fixed in the short run. उत्पादन जो उपादान स्वल्प काल रे स्थिर ताहा अपरिवर्तित. It is independent of output. Whatever may be the output, the factor remains unchanged. यार परिवर्तन हब नाही. It remains unchanged. Only the variable factor can be changed. So, variable factor means that can vary with the level of output. In case of variable factor, when variable factor is 0, output is also 0. When output is 0, there is some variable factor. So, variable factor, there is a variable factors and fixed factors are combined to produce goods and services in the short run. स्वल्प काल रे परिवर्तित उत्पादन आउ स्थिर उपादान को नहीं द्रव्य उत्पादन करा जाए. तो फिक्स्ड फैक्टर मीन्स मशीन, इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज, बिल्डिंग. So, these remain constant. When output is 0, these cost will exist, because these factors is constant in the short run, but variable factor that can vary with the variation of output. When output is 0, there is a 0 variable factor. When output increases, variable factor also increases. When output decreases, variable factor decreases. So, that is it is dependent. यह निर्भरशील. उत्पादन वृद्धि हेले ए उत्पादन वृद्धि पाइबो, उत्पादन ह्रास हेले ए उत्पादन ह्रास पाइबो, उत्पादन शून्य हेले ए उत्पादन शून्य हेबो. यह उत्पादन सहित डिपेंडेंट निर्भरशील. तो इन द शॉर्ट रन, when one factor is variable and other factors are fixed, which relates to operation of a law of variable proportion. So, output changes with the change in factor proportions. So, as we increase the quantity of only one input, keeping other inputs fixed, the total product initially increases at an increasing rate, then decreasing rate, and finally at negative rate. It changes. So, that change arises due to change in factor of fixed factor and variable factor. स्थिर उपादान स्थिर परिवर्तित उपादान रो परिवर्तन फल रे उत्पादन प्रथम पर्याय वृद्धि पाए, द्वितीय पर्याय ह्रास पाए और तृतीय पर्याय ऋणात्मक स्तर आविर्भाव हुए. So, these are the three stages of production in the short run that we call it as law of variable proportion. So, law of variable proportion that is applicable in the short run. It is a very fundamental law in the theory of production. उत्पादन क्षेत्र रे यह एक मौलिक सूत्र. So, this is a very important law
इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन क्षेत्र यह एक गुरुत्वपूर्ण सूत्र यह मध्यम जन उत्पादनकारी संस्था तार उत्पादन कौ समय माने स्टॉप करिवो कौ समय अधिक करिवो ता डिपेंड्स करुच्ची माने गोटे प्रोड्यूसर उपरे सो लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन so law of variable proportion means when one factor input increases keeping other input constant the output initially increases then diminishes and finally it will become negative. So this law assumes certain conditions এই সূত্র কেতে গুড়িয়ে শর্ত উপরে পর্যবেসিত কোন so there are 5 conditions in which this law can operate. Number 1 condition, this law assumes a short run analysis. The law is applicable only in the short run. In the short run the law is applicable because in the short run there is a fixed factor and also a variable factor. So fixed factor is combined with the variable to produce the output. स्थिर उपादान सहित परिवर्ती साधन को संयोजन करी उत्पादन करा जाए तेणु यह स्वल्प काल रे यही सूत्र प्रযোज्य. Number 2 that is no change in techniques of production. So the goods are produced without change in the method of production. So method of production remains constant throughout the production. The producer cannot change the method in which the goods are produced. So it is remain unchanged. The second condition. The third condition is unit of variable factor is homogeneous or equally efficient. So the variable factor which is used should be equally efficient. For example, when one labor is efficient another labor is inefficient. So efficient labor will produce more output than inefficient labor. So the labor put in the production process should be homogeneous, has equal efficiency. So unless this equal efficiency of labor is used this law fails to operate. The fourth one is unit of variable is combined with the fixed factor. So there are 2 factors to be used in this law. So one is a fixed factor, another is a variable factor. So fixed factor means land, equipment. So this factor will remain constant. Only variable factor, that is a labor, raw material, that can change with the change in output. The fourth one is factors production are imperfect substitute. So labor cannot be substituted with the land, that is why this law will operate. Labor cannot be substituted with the land. So land is imperfect substitute. So it cannot be changed. So land is fixed. So when more and more labor and used in the land, so output initially increases, then reaches maximum, diminishes and finally it will become negative. So this law is explained in a tabular form. So tabular form means so that table that can describe the law for variable proportion. So here there is a fixed factor, another is a variable factor. So total output, average output, then marginal output. Total product means total output means total output means return, average product means average output or average return, marginal product means marginal output. So these are to be explained diagrammatically and also in a tabular form to make it easy to understand. So tabular representation, here is a fixed factor. Fixed factor
that is land. Another is a value factor. Labor. Then say total product. Average product. Marginal product. Stage of production. Here we can say land is a fixed factor. Land means 1 acre, that we can use 1 acre. So, land is fixed. The labor can be used 1 into labor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, that proportion is 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9. Here land is fixed, land is fixed 1 acre that we can choose, but value factor, that labor increases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, first one is those 1:1, second is 1:2, third one is 1:3, fourth is 1:4, fifth 1:5, sixth is 1:6, seventh 1:7, and so on. So, now total product first initially increases 10. First one is 10. Suppose assume 10 unit output products. Second is 25. 25. Then come to fourth one is 45. Then come to 60. Then come to 72. 72. Then 78. 78. Then 80. 80. Then come to 78. So, in the initial it increases, then maximum, then decreases. So, now average product. So, average product is equal to total product. Here is TP, here is FP, here is MP. So, FP is equal to TP by V, that is variable factor. Here is variable factor, here is fixed factor. So, that we can average product can be obtained when total product is divided by variable factor. So, 10 divided by 1 is equal to 10. 25 divided by 2 is equal to 12.5. 45 divided by 3, 15. Then 60 divided by 4, 15. Then 72 divided by 5, 14.4. 78 divided by 6, that is 13. 80 divided by 7, 11.4. Then 10. Then 9, 78 divided by 9 is equal to 8.7. Then marginal product. So, marginal product first one is 10, difference delta
dp by delta v. Delta dp 10, then come to 15, then 20, then 15, then 12, then 6, then 2, then a 0, then minus 2. So, initially this is the increasing return stage. Here 10, 15, 20, then increasing return, here decreasing return, third one is negative return. So, these three stages of return that comes from the application of variable factor with the fixed factor. So, these factors are combined to produce a given level of output. Initially, when the producer produces output with the help of the variable factor by combined fixed factor. So, this is the three stages in which the law can operate. Here is a table to describe the law of a variable proportion. So, here the law of a variable proportion explains keeping fixed factor remaining constant by adding more and more variable factor, output increases, then diminishes, then becomes negative. So, initially up to third unit of labor employed, so output increases. So, total output is 10, 25, 45. So, at this stage average product also increases, marginal product also increases. The land is used, that means it is fertile to produce more and more output. That labor is used to produce more output. So, initially output increases. So, the producer will produce output by employing more labor. कारण अधिक श्रमिक जदि से व्यवहार करुच्ची लैंड उपरे ताले उत्पादन वृद्धि पाउछ. तो उत्पादन वृद्धि पाया पर्यंत से कंटिन्यू करिवो कारण जेहेतु उत्पादन बढ़ुची कारण फिक्स्ड फैक्टर तापर सीमित अछि कारण तार लेबर जदि अधिक से व्यवहार करिवो ताले सेही लैंड से अधिक उत्पादन करिवो अप टू ए पॉइंट, देन आफ्टर इट विल diminish. So, at this stage total product increases at an increasing rate, total product increases at an increasing rate. So, also average product and a marginal product. एही समय हाराहारी उत्पाद सीमांत उत्पाद मध्य वृद्धि पाउची. ए स्तर को आमे कहिबा इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज बा वर्धमान उत्पन्न स्तर. या कहिबो वर्धमान उत्पन्न स्तर. एही स्तर रे उत्पादन क्रमश वृद्धि पाउची. तेणु जणे उद्योक्ता से अधिक रु अधिक उत्पन्न करिया पई चाहिबो से लैंड टाकू मैक्सिमम यूटिलाइज करिया पई. देन कम टू व्हेन फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर इज यूज्ड, आउटपुट आल्सो इंक्रीजेस, दैट 45 to 60. तो हियर marginal product declines. So, marginal product declines from 20 to 15. So, here total product increases at a diminishing rate, total product increases at a diminishing rate. So, उत्पादन ह्रासमान हार रे वृद्धि पाउछ. स्टिल एवरेज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव माने एटी हाराहारी उत्पाद तथापि धनात्मक स्तर रे रहउछ कारण से अधिक रु अधिक श्रम विनियोग करुछि
जो पर्यंत तार सीमांत उत्पाद शून्य न हो से पर्यंत सी उत्पादन कर चलो जो सीमांत उत्पाद तार शून्य होगला तापर जदि सी उत्पादन करे तार क्षति हम तार कॉस्ट विल इनक्रीज इंस्टेड आउटपुट इट विल ऐड मोर कॉस्ट दैन टू रेवेन्यू तो जिते तार उत्पादन करने कथा तार आउटपुटा माने कौन बढ़ो किंतु कॉस्ट अधिक हम से तार आइडियल इट इज नॉट आइडियल स्टेज टू प्रोड्यूस आउटपुट जो स्तर तार उत्पादन वृद्धि पाँच किंतु कॉस्ट अधिक हम से आइडियल स्टेज नुहे कारण as long as the producer uses more and more units of labor the output increases but output increases at a diminishing rate. Here marginal product declines from third unit of labor onwards. Third unit of labor onwards it declines and it will become zero when eighth unit of labor employed. So जेते जीरो होची सीमांत उत्पादन शून्य होची सेते मोट उत्पाद मैक्सिमम मोट उत्पाद होची मैक्सिमम 80 इट इज ए क्रुशियल स्टेज ये स्टेज रे जदि से उत्पादन बंद न करे ताहले तार क्षति होबार संभावना अछि कहीं ना इट विल ऐड मोर कॉस्ट तार जति खर्च करुच्ची अधिक खर्च होची तार उत्पादन ठार अधिक खर्च होची ताहले तार जड़े आइडियल प्रोड्यूसर काम होला तो द प्रोड्यूसर डिसाइड where he will stop the production maximum output को जगह तार होची जो जगह maximum output हबो जो अधिक उत्पादन हबो से जगह से स्टॉप करिवो and it will reduce when he uses more and more labor to be added with the fixed factor. So it is not possible on the part of the producer to produce more and more output because here MPG 0 here MPG 0 when MPG 0 TPG maximum when MP0 at 8 units of labor is used TPG 0 here is MPG 0 TPG maximum माने मोट उत्पाद सबुठार सर्वाधिक जदि ए जगार जदि माने जड़े उद्योक्ता स्थिर ठीक न करे ताहले तार नेक्स्ट स्टेज आसी पहुँचब ऋणात्मक स्तर कारण मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कारण जिते से अधिक माने एडिशनल लेबर दैट पुट्स मोर कॉस्ट दैन टू रेवेन्यू जदि आम एडिशनल लेबर यूज करछे ताहले आमर कौन हम ना आमर आउटपुट अपेक्षा आमर अधिक परिव्यय बा अधिक खर्च अधिक हम उत्पादनकारी खर्च अधिक हम तो उत्पादनकारी खर्च जो अधिक है तार से लाभ पाइबनी तो व्हाई यू विल प्रोड्यूस से कहीं उत्पादन कर तो उत्पादन करें जिते तार लाभ थी माने एन आइडियल प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट गोटे आइडियल कॉस्ट माने प्रोड्यूसर लक्ष्य है से सर्वाधिक उत्पादन कर खर्च कम हम ताले खर्च यदि कम है ताले से अधिक लाभवान हम ताले द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर is to maximize output and minimize cost with a view to achieve maximum profit. So here the third stage arises when ninth unit of labor is applied in the production. So ninth unit of labor is applied. So here MPG -2 and TP declines. Here TP declines. Here TP declines. तो मोट उत्पाद ये कमी जाऊँच मोट उत्पाद कमिला कहीं ना ये हूँ टीपी माने कमिला ये ना एमपी इज नेगेटिव तो ये हूँ एवरेज प्रोडक्ट स्टिल पॉजिटिव जो अनुपात ये हूँ कौन ह्रास पाँच ये अनुसार ये माने केबे एटा नेगेटिव हम ना हारे उत्पाद केबे नेगेटिव हम ना कहीं ना टीपीटा ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन टीपी इज पॉजिटिव एपी इज आल्सो पॉजिटिव. So when MP is negative the producer should take the rational decision to stop the production failing which it will be not beneficial for the producer to produce additional output. यह केबे तापाई माने केबे फलप्रद हेबनी जदि से अधिक उत्पादन करे तार क्षति हेबो एवं यह द्वारा तार लाभवान हेबो नै तेणु से डिसाइड करिवो व्हेयर द
producer will stop production and that will help him to maximize his benefit. तो जितेबाला उद्योक्ता तार अधिक लाभवान न हम ताले से सी उत्पादन करिबो नाही। तो उत्पादन करिया को हेले से तार बेनिफिट पाउथिबो माने कॉस्ट अपेक्षा जदि कॉस्ट अधिक होला तार लाभ कम हम जदि कॉस्ट अधिक होला तार माने लाभ जदि तार कॉस्टटा जदि अधिक होला जदि कॉस्ट बढ़ीगला ता लाभ कम हम क्षति सहिबो the cost कमिला लाभ अधिक हम। So here the producer should have to make a choice where to produce and where to stop his production so that the maximum output is to be produced. जितेबाला सी अधिक उत्पादन करिवो कम खर्च रे सेतेबाला से जदि से जगह रे स्थिर न करिवो ताहले से क्षतिग्रस्त हबो। तेणु सो द आइडियल प्रोड्यूसर शुड have always to decide where to stop his production and the production will be closed when the maximum output is produced with a minimum cost. तो ये हूँ जड़े उद्योक्ता लक्ष्य है जे कम खर्च रे अधिक उत्पादन करवा एवं यह तार माने लाभ लक्ष्य को पूर्ण कर पारिबो। तो दिस इज द वेरी क्रुशियल पॉइंट फॉर द प्रोड्यूसर टू डिसाइड the output. So when output is 0, MPG is 0, TPG maximum. So TPG maximum when 8 unit of labor is applied. So here the producer should have to stop. So this is the stage in which the producer should take the rational decision to produce output at the 8 unit of labor is used. So I feel this is the step in which you might have understood how the producer will act according to his the rational manner so as to minimize the cost and maximize the output. Thank you to all.